It's time to greet you. It's time to welcome you on JKSportstime. This time round we are from underground, and I got my colleague here in the com box, Mr. Nazir. And Nazir, how do you do nowadays? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और हम आपकी सेवा में उपस्थित बहुत बड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान में सभी दर्शकों को एक बार हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। और जैसा कि आपको याद होगा, मुकाबला इस समय फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और गांदरबल ग्लेडिएटर्स के विरुद्ध एक आकर्षक रोमांचक मुकाबला इस समय बीच मैदान में शुरुआत हो चली है। गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है। शुरुआत हो चली है पहले ओवर की, और कहना चाहिए आकर्षक विश्वसनीय शुरुआत, बड़ा मुकाबला। और दिग्गज बल्लेबाज अगर हम बात करें दोनों टीमों की ओर से इस मुकाबले में खेल रहे हो, चाहे वो आकिब मीर, जहांगीर लोन, इशनाग, आदिल दादा, कुछ विश्वसनीय लोकप्रिय खिलाड़ी इस मुकाबले में खेलते हुए। Well, exactly, Nazir. Time to Assalamu alaikum and good afternoon, Julie, and all the greetings for all the beloved viewers who have tuned us this afternoon. Earlier on, Mir Obed and others are watching this live broadcast. Thank you, Khan, Jahangir, and others. We are in over number 1, and Ishtiaq Rasool is operating. He bowled the very first over, wonderful over, and gave a cap things tied. Didn't allow the batsman break free. Second over, beginner lefty for the first time on the full, driven but straight, a short extra cover, will get a single nonetheless. He goes up the mark with that single. The lefty and the left hand right hand combination at the crease, which is a great sign. Bright sunshine out here at the centre, little dispersed cloud is way away from the centre, and as here it's quite hard to render service as a commentator here in the com box under the scorching heat time and again. जी बिल्कुल, तापमान की बात करें 33-34 डिग्री का तापमान, और ऐसे में हालांकि अगर टीम की बात करें, बल्लेबाजी करना भी आसान नहीं रहता, और कमेंटेटर्स की बात करें तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अपने दर्शकों के काफ़ी आभारी रहेंगे जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार देते हुए, और उसी बीच सीधा प्रसारण आप तक का पहुंचता हुआ। इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ से अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला वहां पर, हालांकि प्रयास करने की कोशिश लेकिन असफल, रन वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन शुरुआती ओवर है, एक सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी दोनों छोर से गेंदबाजों को। गांदरबल ग्लेडिएटर्स जो कि समय टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हैं, प्रारंभिक जोड़ी पहले ओवर में। इस ओवर में अगली बार ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से खेला, बेहतरीन स्ट्रोक, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। आकर्षक दर्शनीय स्ट्रोक और 4 रन यहां पर जोड़ते हुए गांदरबल ग्लेडिएटर्स के खाते में। Well, audacious shot, I should say, and I have to say that audacious one, straight over the mid-off, down to the boundary, 4 more runs. And as you look at that shot selection, proper shot and proper cricketing shot, I should say, goes right behind the ball, lifted that one up, and saw the fielder up inside the 30 yard, using that effect to larger extent. जी बिल्कुल, बेहतरीन प्रयास, और इस बार एक और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, और कलाइयों के सारे जिस प्रकार से सीधे बल्ले से खेलते हैं पूरी तरह से गेंद की लाइन में आकर के, और कहना चाहिए कि जितनी भी प्रशंसा की जाए वहां पर बल्लेबाज की उतनी कम। 1 रन और खाते में जोड़ता है, एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में इस खूबसूरत मैदान पे इंदिरागाम क्रिकेट स्टेडियम और रहमान कप T20 वर्ष 2022 के अंतर्गत यह प्रतियोगिता सफल आयोजन, और काफी कुछ श्रेय जो है मीर हसन को जाता है। इस बार अगली गेंद को गैप का इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ। Well, thank you, Pari Asif and others, for your love. Well, we got the big and the stalwarts of Valley Cricket. We got Diamond of North Kashmir. We got Mr. Consistent Akimir. They're the second slip, and we got Diamond of North Kashmir. Not only North Kashmir, Diamond of the Valley. Jahangir Lone is at first slip, second slip, Mr. Consistent. Oh, that is a beauty. That is a wonderful ball. As you look at that, and that is a wonderful sight for every pacer when the ball tends to move outwards and beating the batsman on the outside. And you have to give credit to the bowler, and that is a kind of treat to watch on that occasion. The ball moving away, shaping away off the deck. जी बिल्कुल, और प्रशंसा करनी होगी गेंदबाज की कि जिस प्रकार से 2 स्लिप लगा के रखे, और दोनों स्लिप के, और यानी कहना चाहिए कि एक फील्ड अनुशासित गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज द्वारा, और जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम। निश्चित तौर पे शानदार शुरुआत, और कहना चाहिए कि यदि आप एक सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं आपको लाभ मिल सकता है। Well, exactly, you have to make sure that you bowl in the right areas up front. When you're bowling first in a T20 encounter,
there is margin of error is very less, and you have to be circumspect. You have to make sure that you ball in the right areas. जी बिल्कुल अच्छी गेंद इस बार नए ओवर की शुरुआत ऑफ स्टंप पर पड़ती हुई गेंद और बाहर की तरफ निकली और सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में दूसरा ओवर में प्रगति पर और लगातार इस समय अच्छी गेंदबाजी होती हुई कहना चाहिए। अगर बात करें फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की, जो कि आज गेंदबाजी करते हुए हालांकि टॉस जीता था गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम ने। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, तीसरी गेंद की पुनरावृत्ति और इस बार ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई और सीधे गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। कहना चाहिए यहां पर दो स्लिप लगा के रखी हैं आकिब मीर और जहांगीर लोन के रूप में और बिल्कुल फील्ड अनुशासित गेंदबाजी होती हुई आकर्षक निर्णायक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। You mean toss won by Friends Motors Narbal, and they opted to field first in this big match, and that's why that is the result. Ganderbal are batting first. Is there any nick? We'll have to wait and watch. Umpire says not out. Well, they looked interested for a while, but Indian umpire signals that it is not out, so no harm done. Score a man static. We are in over number 3 of the match. It is Ishtiaq Rasool is operating, and he's bowling to left-hander, 2 slips, to be precise 3 slips in place because the ball is moving on. Look at that one once again, a wonderful try, sign of outswing, and that is another great delivery, moving away from the batsman, and he was unable to get right behind the line of the ball once again. Nice observation. If you know that ball is swinging away up the deck, let's try to get forward with a long stride forward and try to defend that swing and try to end up that old swing which is belatedly moving outwards. We'll go through the Friends Motors Narbal. They got Ishtiaq Rasool, they got Jahangir Lone, they got Uzaib, they got Mujib, they got Umais, they got Ishfaq, they got Akimi, they got Abdul Qayyum, Imtiaz lefty, Zaidar and Adil Dada is playing in their side. That is a great shot, and that's gone over backward, a 0.1 bounce into the fence, and we'll have to wait and watch, but it looks like that's a boundary that has been superbly done off the back foot, surgical and clinical procedure of the back foot, and look at that one, slashed her off the back foot and down to the cover point boundary for 4. जी बिल्कुल, जैसे ही वहां पर जगह मिली और अपने आप को पोजीशन करते हुए बैक फुट पे जाकर के उसको निकाल दिया कवर पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, और 4 रनों के साथ ही संभवतः स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। दूसरे ओवर में गांदरबल ग्लेडिएटर्स का फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध आकर्षक और विश्वसनीय शुरुआत। आवश्यकता भी है इस प्रकार की पारी की, और बिल्कुल लोसी मुद्रा में दोनों बल्लेबाज, एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज में बीच मैदान में। इश्तियाक नाग इस गेंद को अच्छी गेंद और बाहर उछाल लेते हुए, हालांकि वहां पर सम्मानजनक रूप से बैट और पैर मिलाकर खेलने की कोशिश, गेंद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। अच्छा वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, और कहना चाहिए 33-34 डिग्री का तापमान और क्रिकेट का उत्साह इस समय सर चढ़ के बोलता हुआ। अगर हम इस मुकाबले की इस प्रतियोगिता की बात करें, रहमान कप T20 वर्ष 2022 की यह सफल प्रतियोगिता, और जिसका के सारा श्रेय अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा मीर हसन को जाता हुआ। अगली गेंद और इस बार भीतरी किनारा लेती हुई गेंद वहां पर पहुंची खिलाड़ी के पास, जब तक उसको फील्ड किया जाता 1 रन, और 17 हो गया है कुल योग दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। Well, 3 runs, 17 for Ganderbal Gladiators. They got Khurshid Lone, they got Dr. Samir, they got Uwais Khan, Shaukat Baba, and Samir, then Adil and Shahid Dhoni, and they got Ubaid and Sahil Nazir, and they got Sahil Pollard and Khalid Ahmad. This is the playing 11 of other side. Hassan Habib, Uwais Lone and others. Thank you for your love and support. Well, the big names of the Valley: Nazir, Jahangir Lone, Akib Mir, Zaidar, Ishtiaq Rasool. These are the big guys of the Valley, and they have been playing ever since the arrival of this very format in this part of the world. They have been performing consistently on regular basis, and that's why they have made their name and fame out of this top competition here in the Valley. जी बिल्कुल, और अपने व्यूवर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ हमारे व्यूवर्स ओवेस लोन के साथ अली जो है जुड़े हुए, और बहुत बहुत स्वागत। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़े रहिए हमारे साथ और इस मुकाबले का आनंद लीजिए। नए ओवर की शुरुआत, पहली ही गेंद वहां पर और कैच वहां पे लपक लिया, और इस प्रकार से हालांकि वहां पे कहना चाहिए जी हाँ पहला विकेट गिरता हुआ, और पहले विकेट के साथ ही जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि शुरुआती ओवर में संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी गांदरबल ग्लेडिएटर्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को, लेकिन एकदम एकाग्रता भंग हुई और इस प्रकार से पहला विकेट मिलता हुआ, और करीब करीब
17 पे पहला विकेट गिर चुका है तीसरे ओवर में और उत्साह से लबरेज इसमें फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम क्यों न हो शुरुआती ओवर में एक सफलता प्राप्त कर लिया। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से और आनंद लीजिए इस संघर्षपूर्ण मुकाबले का। खान शिराज बट हाशिम के साथ और एमडी अयाज भी शेख परवेज के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अपना प्यार और विचार देने के लिए और आप अपना प्रेम और विचार डिजिटल टोकन के जरिए भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इसी प्रकार से बने रहिए और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हमारे इस सीधे पसंद को शेयर करना ना बोले ताकि अन्य लोग जुड़कर इस बड़े कांटे की टक्कर के मुकाबले में हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकें। Well, Nazir, Gladiators lost their wicket number 1, but look at that dipping low catch, and that was a terrific take. And my scorer corrects me here. He says 2 down. Ganderbal Gladiators, they are under the serious hammer. And Nisar Asad writes in, please mention myself Munawar Tanveer alongside me here in the com box, my colleague Nazir Ahmed. And you can find me on Facebook through Nam Munawar Speaks, and my colleague Nazir Saab is always there. And in the meantime, Sheikh Nazir, in the meantime, Sheikh Yasser Yaqub and Wazir and Sheikh Yasser Ifajan and others are watching, and Zaid Musa. Thank you all the beloved viewers. Thank you for joining us this afternoon and catching us live on JK Sports Time. It's your love which keeps we people motivated time and again. Well, the team Friends Motors Narbal has got the likes of Jangir Lon, they got Mr. Consistent Akib Mir, they got Adil Dada. In their lineup they got Ishtiyaq Nag, and you know the name Nag itself describes and he himself exhibits how terrific, how big player he is, how he goes distant. You everyone know more than us, and you are absolutely knowing him very well because you have been covering the cricket time and again. And we are in over number 4 of the match. It is Imtiaz lefty continues to bowl. On strike is the right-hander batsman, waits for Imtiaz lefty comes on to bowl that one and driven straight down to the mid off. No run there. Nice observation once again as he goes right behind the line of the ball, off of the bat face. Better is to structure the basics and make sure that you're gonna play the ball on merit. जी बिल्कुल गेंद की लाइन में आना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे सम्मानजनक रूप से। पिच के मजाज को देखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे। क्या इसमें सक्षम हो पाते हैं अथवा नहीं। अगली गेंद को खेला जरूर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि वहां पर खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ संभवतः 18 रन। ये पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है और इम्तियाज लेफ्टी जो इस समय गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए और सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर जगह दी और गैप का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, a scare drop the back foot and down towards a sweeper cover boundary, 4 more runs. That is a terrific shot of the back foot and that launches forward and goes right behind the line of the ball, opening the bat face. Just took his left leg out of the line of the ball, then directed it towards the sweeper cover boundary. That is another superb and sublime stroke of the front foot down to the boundary. 4 more runs added to the tally in the form of that boundary. जी बिल्कुल, और यहाँ पर जितने भी प्रशंसा की जाए इस बल्लेबाज की उतने कम। अंतिम समय तक गेंद के आने का इंतजार किया और सिर्फ दिशा भर दे दी स्वीपर कवर के क्षेत्र में। 4 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन और हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ बने हुए स्वागत करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। नए ओवर की शुरुआत इश्तियाक रसूल की पहली ही गेंद, अच्छी गेंद इस बार बैट और पैड पे लगने के बाद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। और कहना चाहिए जिस प्रकार से अपनी गेंदों में परिवर्तन करते हैं इश्तियाक रसूल, ये एक बहुत बड़ी कला होती है एक गेंदबाज की। हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज भी है और लोकप्रिय खिलाड़ी है जिस प्रकार से इस समय गेंदबाजी करते हैं। हालांकि दायित्व उनके कंधों पर है और बहुत ही शानदार तरीके से इस समय गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंद और इस बार वहां पर अंपायर का इशारा नो बॉल का, और यहां पे ध्यान देना होगा गेंदबाज को कि शुरुआती ओवर्स में अगर आप अतिरिक्त रन देते हैं, अतिरिक्त जोखिम वहां पे उठाते हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस बड़े मुकाबले में शायद आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मुनव्वर, well, thank you Khan Jahangir, Marine Majid, Khan Jahangir and Sagar Sajjad. Well, you're talking about that front foot issue and he has to make that. He keeps his foot behind that popping crease and once again it was stubborn and that's going to be a no ball coming up. And let's wait and watch, find it out alongside. That's what's gonna come your way on this very delivery. Free hit coming up and knocked him or cleaned him up, but that is a free hit and that is why the batsman is still out in the middle. And thank you all the beloved viewers for your love in sport. Well, once again
The need of an hour is to get your eyes in, then stuck to the basics and play the ball on merit. You have to make sure of that and just try to stick to the basics. The way Mr. Consistent loves to play the ball, he goes right behind the ball every day. And you might have covered the yesterday match there in Charlebourg, and you can see that how he was playing. And these batters need to work on the basics and try to follow the footsteps of this man, Mr. Consistent. How he goes right behind the ball, how he launches forward, how he uses the depth of the crease. That is important. And once again we saw that is a terrific ball, cranking just up, and batsman was unable to keep that one down. I think he has hurt himself, but it doesn't seem to be. He seems to be okay and is gonna go face the next one. जी बिल्कुल, हालांकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बात करें इस गेंद के बाद चर्चा जरूर करेंगे। इश्तियाक रसूल की गेंद बाहर जगह मिली, उपेक्षा से ज्यादा उछली और उसका इस्तेमाल किया, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और दर्शनीय स्ट्रोक पुल के अंदाज में इस गेंद को खेला और 4 रन अर्जित किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर एक बात और, T20 क्रिकेट जो है, हालांकि जिसे ताबड़तोड़ क्रिकेट भी कहा जाता है, लेकिन मनोहर भाई उतना भी ताबड़तोड़ नहीं कि आप शुरुआती ओवर से ही जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश करेंगे। विकेट को थोड़ा सा पढ़ना होगा और उसके बाद गेंद की लाइन में आकर गेंद की मेरिट के हिसाब से स्ट्रोक्स लगाने होंगे। अच्छी गेंदों का मान रखना होगा और खराब गेंदों को सही नसीहत देनी होगी, और शायद यही इस T20 की महानता। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि पिछली गेंद पर चौका, और इस बार शानदार वापसी करते हैं वहां पर इश्तियाक रसूल। सीधे मिड स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला बगैर किसी रन के। अच्छी शुरुआत। Well, it was a kind of a bunt shot of the middle part of the blade, so-called the carpet, and he keeps that one out towards the senior position. No run there. That's a dot ball. जी बिल्कुल, और इश्तियाक रसूल है गेंदबाज जो कि इस समय पारी का 5वां ओवर लेकर के, और बाहर अच्छी गेंद फिर ऑफ मिड स्टंप पे आती हुई खेला, उसको जरूर खुद वहां पर फील्ड किया इश्तियाक द्वारा बगैर किसी रन के। आकर्षक मुकाबला फ्रेंड्स 11 क्षमा कीजिएगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और गांदरबल ग्लेडिएटर्स के विरुद्ध चलता हुआ। Ovais Khan and his colleague Samir is out in the middle. Ovais and Samir has to make sure that they are in with a chance and they get their eyes in, then top of the shots. And you were talking about that, playing the ball on merit, and that one which was cranking up almost up to the shoulder height, and he hooked to that one all the way down to the backward scallop boundary. That earned him a boundary and his side. But that's what they need at this crucial juncture. Get their eyes in, stick to the basics, make sure that you play the ball on merit, and that is the need of an hour as per the Ganderbal Gladiators are concerned. They lost 2 of their premium batters, and the 2 batters out in the middle. We got Ovais Khan and his colleague Samir. जी बिल्कुल, ओवैस खान और समीर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में, और नए ओवर की शुरुआत होती हुई इम्तियाज लेफ्टी द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि खेला उसको जब तक उसको फील्ड किया जाता है। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ लगातार इस समय प्रयास करते हुए, सिंगल्स डबल से स्ट्राइक रोटेट रखते हुए दोनों बल्लेबाज, और कहना चाहिए एक साझेदारी की आवश्यकता है। शुरुआती ओवर में 2 विकेट टेक हो चुकी है गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ, और रहमान कप T20 वर्ष 2022 की प्रतियोगिता का सफल आयोजन, और इस समय बीच मैदान में ये महत्वपूर्ण मुकाबला चलता है। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार वहां पर जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन संभवतः उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम नकारा उसको। हालांकि दोनों बल्लेबाज इस समय असहजता कहना चाहिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विश्वसनीय तौर पर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है यदि फ्रेंड्स मोटर्स गांदरबल के विरुद्ध, क्षमा कीजिएगा फ्रेंड्स मोटर नारबल के विरुद्ध एक बड़ा लक्ष्य रखना है। ये कहीं ना कहीं उन्हें ध्यान में जरूर रखना होगा, मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा गेंदबाजी के लिए। इम्तियाज लेफ्टी हैं गेंदबाज, और सामना करने के लिए तैयार हैं समीर। इस ओवर में आखिरी बार बाएं हाथ से उनकी ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, उठा दिया उसको, गेंद निकल गई दूर उस शोर दर्शक बीरगांव में। 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा, और इस छक्के के साथ ही कुल योग बढ़ता हुआ करीब 34। Al-Nazir, that one disappears over the long on for 6, and these 2 batters, Ovais Khan and Samir, they are playing the ball on merit, and Jack is at first slip. They have to make sure that they won't provide them any sort of freebie, and that's a wonderful delivery. That is a pitch, and that's a nice comeback, and one has to praise the bowler and even the batter. But
that is where they need to work on the basics, and you can still use the depth of the crease. We were yesterday talking with Gavar Aman, and he can definitely dab that one down towards the third man, but that doesn't seem to be coming. And look at that one, he goes right behind that one and offer the bat face and straight down to the mid-off. We'll get a single nonetheless. Nasir, the need of an hour is to get your eyes in. Time and again I'm throwing it out because the batters who are coming in, they're lacking those patience, and time and again I'm saying that you have to be patient out there. जी बिल्कुल, और संयम और आत्मविश्वास धैर्य रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को, और उसके भेद स्ट्रोक्स लेने होंगे और अंत तक रहना होगा पूरे 20 ओवर का ये मुकाबला। हालांकि इस गेंद पर ओवेस ने खेलकर एक रन पूरा कर लिया, संभवतः वहां पर ओवर भी पूरा हुआ और करीब करीब 6 ओवर संभवतः पूरे हो चुके हैं। लगातार इसमें प्रयास होता हुआ, हालांकि आज गांदरबल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले लिया। 5 ओवर संभवतः वहां पर 6 ओवर, जी हां 6 ओवर पूरे हो चुके हैं और 38 रन बना लिए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम ने फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के बाद आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ, और ओवेस समीर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में और एक साझेदारी धीरे धीरे से पनपती है। दूसरी ओर एक फील्ड अनुशासित आकर्षक नफीतुली गेंदबाजी करनी होगी दोनों छोर से गेंदबाजों को यदि इस मुकाबले में बने रहना। आकर्षक मुकाबला, और एक बार फिर अपने सभी जेके स्पोर्ट्स टाइम के व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। लगातार हमारे साथ दाऊद, अमीन, इरफान के साथ बने हुए शेख इम्तियाज भी सैयद इशफाक के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए 38 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। Well, we are in over number 7 of the match. We'll have to wait and watch who's going to come in and bowl that over. Well, the big names of the Valley, Jahangir Lone is playing, Mr. Consistent Akimir is playing, Adil Dada is also playing, Ishtiaq Rasool is also playing, and Zaidar is also, he has also made his way. Oh, that's in the air, blowing up in the air up the top edge, but that doesn't carry to the fielder. It drops in no man's area, so no harm done. Score man static for the loss of 2. 38 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर इस समय प्रगति पर है, और बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे परिवर्तन के तौर पर गेंदबाज को लगाया गया है, और किस प्रकार से वो यहां से गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ओवेस के विरुद्ध इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हल्के बल्ला चलाया, गेंद नीचे बल्ला हवा में, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। और बिल्कुल मेरे सहयोगी कमेंटेटर इस बात पर लगातार बने हुए हैं कि जिस प्रकार से लगातार बल्लेबाज अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक कर लेने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि अपना विकेट गवा बैठते हैं। यहां पे आत्मविश्वास रखना होगा, अंत तक खेलना होगा, संयम और आत्मविश्वास के साथ इस पारी को आगे ले जाना होगा। इस ओवर में अगली बार ओवेस के लिए, और फिर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पूरी तरह से चकाती हुई बल्लेबाज को, और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में विश्राम करते हुए कहना चाहिए बेहतरीन और लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय गेंदबाज द्वारा। Well, Ishfaq beaten Uwais on the Uwais Khan on that occasion, and Uwais Khan once again caught fishing outside the off stump, caught napping to be precise. You have to be agile out in the middle. As a batter, you have to make sure that you play the ball on merit. Every ball, you go right behind the ball. You provide that sort of respect to every ball. You give the respect to every ball it deserves, and even if it needs a treatment, you have to deliver that sort of a treatment it deserves, isn't? Down the leg side, way down the leg side, there is addition in the total. 39 for the loss of 2. We are in over number 7 of the match. It is Ishfaq operating. Ishfaq Butt is bowling to Samir, and Uwais Khan is bowling to Uwais Khan, and Uwais Khan is on strike. Once again Ishfaq Butt comes on to bowl. Oh, beautifully bowled through the bat and body into the safe hands of the wicketkeeper. Well, wicketkeeper looks back in disbelief, and he doesn't know how did that miss the stumps. That was a wonderful delivery that comes into the batsman and created sort of an inroad to knock him over, but luckily the ball flies away from the sticks, so no harm done. Score man static for the loss of 2. लगातार इस समय परेशानी में है गेंदबाज बल्लेबाज ओवेस शाह। इस गेंदबाज के द्वारा लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। इस बार इस गेंद को खिला, पीछे है खिलाड़ी, लेकिन गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और काफी लंबे समय के बाद ये चौका बल्ले से निकलता ओवेस के, और कहना चाहिए इस चौके के साथ उनका आत्मविश्वास दोबारा लौटा होगा। Well, clipped down towards the sky-like boundary. 4 more runs. 2 men gives the chase. None would get to the ball, bisecting both the fielders, and it runs down to the boundary, and that boundary takes the score to 44 for the loss of 2. We are in over number 7. Ishfaq bowling to Uwais Khan, and Uwais Khan clipped away that one down towards the sky-like. 4 more runs. Next ball coming up. This broadcast is brought to you by
Arco Fenestration, Fashion Fiesta, Anthem Sports India, Shining Star Papur, and MHM Multi-Fashion Branded Store. Oh, that one once again, wonderful delivery. And look at that one, tall, lanky guy bowled that delivery at a tremendous pace. The ball kicking off the surface, but away from the batsman. No shot being offered. Lets it go through. Wicketkeeper does the rest. कड़ी प्रश्न कहना चाहिए पूछे जा रहे हैं पर बल्लेबाज अवेज से, हालांकि असहजता महसूस कर रहे हैं। एक स्ट्रोक जरूर उन्होंने खेला था 4 रनों के लिए, लेकिन जिस प्रकार से लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, और ये एक बेहतरीन कहा जा सकता है अगर हम गेंदबाजों की बात करें। जिस प्रकार से लगातार उन्होंने परेशान करके रखा है इस ओवर में, ओवेस को यहां से साझेदारी की आवश्यकता है, और किस प्रकार से वो यहां से साझेदारी को आगे निभाएंगे ये देखने वाली बात होगी। समीर और ओवेस की जोड़ी इस समय बीच मैदान में, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी में, ये देखते हुए कि 2 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन जा चुके हैं, और इस समय कुल योग 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। रहमान कप T20 वर्ष 2022 के अंतर्गत यह प्रतियोगिता, और इस समय बीच मैदान में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और गांदरबल ग्लेडिएटर्स के विरुद्ध भिड़ंत होती हुई। Well, fresh over begins. Mr. Consistent is going to bowl. He is going to prove his worth with the ball, and he has been given the ball. Jahangir Lone is at first slip, then followed by backward a point, sweeper cover on the boundary, short extra cover mid off on the boundary. Mid-on on the boundary, mid-wicket drops down to the boundary, Skalak drops down to the boundary, and backward Skalak Dada is there. Backward Skalak, and here comes Mr. Consistent. Oh, good delivery, right and money on target, and keeps that one out towards the Cillier cover area. We'll get a single, score moves to 42 for 2. We are in over number 8 of the match. Consistent, Mr. Consistent is bowling for the first time. Those who are watching Kaisar Nizami, Junaid Al-Islam, Saeed Ishfaq and others, thank you all the beloved viewers for your love and support. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, Anthem Sports India. Next ball coming up. Oh, good ball, and equally to the task on the occasion. Keeps that one out towards once again that Cillier cover area. Won't get any run on the occasion, and Philip pouncing on the ball, and batsman has to decide against it. Score man's 42 for 2. Over number 8 in progress. Mr. Consistent, Akimir continues to bowl. Next one, good delivery once again, straight in a one, and driven handsomely, and eases up a bit with that single. Score moves to 43 for 2. Over number 8 in progress. Ehsanul Haq, Lon Adil and others, thank you for joining us this afternoon belatedly. Well, Arco Fenestration, Fashion Fiesta, Anthem Supports India, MHM and Shining Star Papur, these are our proud sponsors. That's a good shot down towards the cover point region. Another single fetched with ease by the 2 batters. That was pitching on middle and off, then moving quite outwards, and batsman putting bat onto it down towards the cover point region. Another single yielded 45 on the board for the loss of 2. Next ball, that is in the air. Will this be allowed? That has gone all the way. Yes, it does. It is a big end, big enough down to the boundary, and it has done the distance, got the elevation and got the distance. 6 more, and 6 more patched out of that one. That brings up 50, I think so, in over number 8. And Consistent ball that half volley, that half tracker, and that over pitch delivery, and asking to be put away, and batsman lifted that one up, and in no time the ball disappears in that portion of long off. जी बिल्कुल, और बेहतरीन स्ट्रोक खेला यहाँ पर क्लाइयों के सहारे, और कहना चाहिए 6 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ओवेस जो असहजता महसूस कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर इस बार पूरी तरह से गेंद की लाइन में आकर के स्ट्रोक को खेला 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ ही करीब 50 रन बना लिए हैं गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध। कहना चाहिए आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। 2 विकेट इस समय गंवा चुकी है गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम, लेकिन जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहना चाहिए एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, और आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। आखिर की ये गेंद, और इस बार हवा में काफी देर रहने के बाद हालांकि नो बैट्स लैंड में गिरती हुई पीछे खिलाड़ी रह गए। 1 रन पूरा किया चहलकदमी के साथ, और 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता 51। ये पारी का 8वां ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 51 पे 2 गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध। आकर्षक मुकाबला, और कहना चाहिए कि आशा करते हैं क्रिकेट के सभी दर्शक समर्थक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, और हमारे व्यूअर्स भी लगातार जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत स्वागत, आभारी, और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देने के लिए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस मुकाबले का। Well, going through the 2 teams, we got Ganderbal Gladiators, Khurshid Lon, Dr. Samir, Awais Khan, Shaukat Baba, Samir Mama and Adil Ahmed, Shahid Dhoni, Ubaid Ahmed, Shahid Ahmed Nazir, Shahid Ahmed Nazir, Sahil Nazir to be precise, and Sahil Palad and Khalid Ahmed. It should have been Sahil Nazir, isn't it? And his
mentioned and he need to rectify that. Ishfaq Nog is, oh, that is a beautiful delivery. Look at that one. Look at that one. That is a ripper. Absolutely unbelievable one. And nearly got undone with that. He must be thanking the divine forces on that occasion. Beaten all ends up. And the ball moving away, shaping away up the deck. And it reminds me of great tracks at International Arena. The ball tends to move in that superb manner and beating the batsman. That is a wonderful sight and sign for everyone to witness. And it is a kind of treat eyes. इशफाक है संभवतः गेंदबाज और इस बार अच्छी गेंदबाजी इसके लिए, हालांकि वहां पर पैड पे टकराने के बाद एक रन पूरा कर रहे हैं जब तक उसको फील्ड किया जाता, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए बेहतरीन प्रदर्शन। 52 रन हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। ओवेस और समीर की जोड़ी समय बीच मैदान में और गेंदबाजी का मोर्चा इशफाक के पास अच्छी खासी रफ्तार है, उनके पास पूरी तरह से रफ्तार का प्रयोग करते हुए ऑफिस सम के आसपास गेंदबाजी का मोर्चा रखे। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि उपेक्षा से ज्यादा उछलती, लेकिन यहां पर दोहरे मन से रह गए बल्लेबाज, गेंद उनके शरीर पर टकराई और बगैर किसी रन के 52 अभी भी टिका हुआ स्कोर। गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध आकर्षक मुकाबले समय बीच मैदान में। आदिल दादा, जहांगीर लोन, आकिब मीर, इश्तियाक रसूल, कुछ दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में खेलते हुए और कहना चाहिए बहुत ही बेहतरीन और विश्वसनीय मुकाबला इस समय इंदिरागाम के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में ये मुकाबला चलता हुआ। Well, Ishtiaq Nog is playing for Friends Motors Narbal, Jahangir Lone and Ishfaq, but that is another good delivery. After pitching on good length area, the ball raises up almost up to the rib cage, but way away from the batsman, and wicketkeeper does well behind the sticks. Amir Aziz and Prince Shabir, all the beloveds, thank you for your love and support. Keep sending us the digital stars and we will definitely include your names in the live broadcast. Well, Friends Motors Narbal, Ishtiaq Nog, Jahangir Lone, Uzaib Mujib, Umais Ifu and Ishfaq Butt, Akib Mir, Abdul Qayyum, Imtiaz Lefty, Zaidar and Adil Dada is in their playing 11. That's a good shot. Keeps that one out towards the back with a point, no run there. And look at the Mr. Consistent diving full length to his left and stops what could have been a boundary, because it's easy if whosoever manages to pierce the gap, and if he manages to go through that off cordon within the 30 yard, and that means that should run away down to the boundary because the outfield is electric quick. जी बिल्कुल, और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन वहां पर आकिब दौरा, इस बार फिर खेला उसी दिशा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज एक रन से संतुष्ट, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और 53 हो गया कुल योग 2 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर पूरे हो चुके हैं और कहना चाहिए एक बेहतरीन विश्वसनीय शुरुआत। हालांकि विकेट अभी हाथ में है, तो ऐसे में आने वाले समय में शायद और ज्यादा प्रहार करेंगे। हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ बने हुए, यासर गनई के साथ सागर बिन हमीद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत और आभारी पूरी कमेंट्री टीम जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। आप इस प्रकार से अपना प्यार और विचार देते हुए, स्थिति यह है 9 ओवर पूरे हो चुके हैं गांदरबल ग्लेडिएटर्स के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और अब तक का कहना चाहिए कि 9 ओवर में 53 रन बना लिया है, मात्र 2 विकेट खोकर। इस समय समीर और ओवेस की जोड़ी और आकिब एक बार फिर नए ओवर की शुरुआत करते हुए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि खेला लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 53 रन 10वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। Samir on strike, playing cross the line. That is poor shot selection. Go right behind the ball and just lunge forward and then try to play out towards the long on or long off. You have enough areas to knock the ball. But next ball coming up, good ball. Right hand money on target, and batsman equally to the task. Stands tall to that one. Keeps it down and out towards the Cillier cover, no run there. Score remains 54 for 2. Over number 10 in progress. Mr. Consistent is operating from the far end as per our com box is concerned. Next ball coming up. Oh, another good ball on middle and leg, not giving an inch away, and batsman is unable to break free. And if he manages to go cross the line, it can castle him. So batter is to stick to the basics and make sure that you offer the bat face to every ball. You play the ball on merit, and providing the circumstances, provided the circumstance here at the Sun, you have to make sure that you have no error. You have no margin for error, and the margin of error is pretty less, isn't?
जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 7% सहमत हूं। और यहाँ पे मनोहर भाई एक बार और स्पेशल कि ये 4 ओवर जिस प्रकार से आकिब मीर गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल नपी तुली कसी हुई गेंदबाजी और पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा है। और कहना चाहिए ये 4 ओवर जो उनके हैं, मैं समझता हूँ काफी निर्भर करेगा इन 4 ओवर्स में अगर हम बात करें फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की। Well, batting side have to make sure that if Akib Mir isn't gonna give away runs, they have to make sure they must be eyeing other bowlers. They have to attack someone else, and they must be eyeing that at this crucial juncture because they need runs. As they know that they're playing against the top side of the valley. Friends Motors Narbal, they got the likes of the valley's big names. Well, once again I would throw out the names. Ishtiaq Nag is playing. Jahangir Lone is there. Uzab is there, Mujib is in their lineup, Umais Ifu is there, Ishfaq Bhatt is there, Akib Mir is there, Abdul Qayyum is there, Imtiaz Lefty is there, and Zaidar and Adil Dada. This is their lineup. Terrific side, evenly poised, big team of the valley, stars and the heavyweights are the part of their side. And the Ganderbal Gladiators know that they got the big mans in their side. Some of them, they love to go downtown, distant, they love to maroon the cricket ball. Be it Ishtiaq Rasool, he knows only one language. And he knows how to go after the bowlers. And he knows nothing else. He doesn't want to waste time. When he arrives, he straight away announces himself that I'm Ishtiaq Rasool, myself, namely Nag. I'm in and I'm gonna hit you out of the park time and again. But followed by Jack Clone, the diamond of the valley, is also proved its worth. And then followed by Adil Dada is another big guy, the big name. Then followed by Zaidar, Imtiaz, Lefty, and they have got the likes of Dada and others. So this is a big side. Hakimir is also playing in the lineup. And you have to make sure that you put runs on the board. As per we're talking of the Ganderbal Gladiators, they need to put in excess of 170 or 180. Anything beyond 180s will give us something, a big match, a match worthy of that score. Will definitely mean this will definitely go down to the wire, and an electric one and a high voltage encounter. And Shabir Sudan writes in, and Abid Majid, thank you. But as per Ganderbal Gladiators are concerned, if they manage to put in excess of 140 and below 150, that means that's going to be easy chase for the Friends Motors Narbal, because this ground has got big boundaries, no doubt about that. But they love to play on this very track. And if we talk of Ishtiaq Rasool, he's got a good tag record at this very center. He has hit few hundreds on this very track, so he loves to get underway on this very track in style. So Nazir, at this very crucial juncture, we got a kind of breather here in the Combox. We'd like to thank all the sponsors, our Arc of Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, followed by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Papur, and MHM Multi-Fashion Branded Store Magam. And these are our proud sponsors. And Faizu Faizan, GM Rathar Khurshidwani, and others who joined us this afternoon. Thank you and walaikum salam, all the beloved viewers, for tuning into the live broadcast of JKSportstime. Nazir. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और जिस प्रकार से हालांकि इस समय स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया था, 10 ओवर पूरे हो चुके थे और 2 विकेट भी गंवाए हैं गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम ने, 53 रन बनाए हैं। और इस समय बीच मैदान में ओवैस और समीर की जोड़ी, और यहां पे किस प्रकार से अब स्ट्रेटेजी होगी, किस प्रकार से रणनीति योजना होगी, ये देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार से हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि यहां से ये देखते हुए कि एक मैं समझता हूं दिग्गज बल्लेबाजी लाइनअप है। नंबर 10 तक अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी है इस समय फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के पास। और इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कहना होगा कि 200 करीब 150 के ऊपर ही रन चेज करना होगा यहां से फ्रेंड्स मोटर को। अगर आप 150-160 का लक्ष्य रखते हैं तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए आकर्षक मुकाबला हो सकता है इस मैदान पर। जिस प्रकार से अगर हाल फिलहाल के रिकॉर्ड को देखें, चाहे वो इश्तियाक रसूल हो, आकिब मीर हो, जहांगीर लोन हो, बहुत ही लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन रहा है। और ऐसे में ये ध्यान में रखते हुए गांदरबल ग्लेडिएटर्स को एक बड़ा लक्ष्य रखना होगा यदि इस मुकाबले को जीतना होगा। एक बार फिर सभी व्यूअर्स को स्वागत करना चाहेंगे, हमारे साथ बने रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। यह आकर्षक मुकाबला इस समय रहमान कप T20 वर्ष 2022 के अंतर्गत। और अगर इस मुकाबले, हालांकि इस गेंद के बाद जरूर इस बात पर टिप्पणी करेंगे, नई ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला, पीछे है खिलाड़ी, लेकिन गेंद जब तक फील होकर के आती संभवतः दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं। और जब तक गेंद विकेट कीपर के हाथ में, दूसरा रन भी पूरा कर लिया और साथ ही खिलाड़ियों ने वहां पर प्रशंसा की, 2 रन और खाते में जुड़ते हुए। और कुल योग इस समय
पहुंचाया। 55 रन 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। जिस प्रकार से हालांकि इस प्रतियोगिता की अगर बात करें, मीर हसन का काफी कुछ जो है योगदान रहा है इस प्रतियोगिता में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर गेंद हवा में, लेकिन थोड़े खिलाड़ी रह गए पीछे और संभावित तौर पर यदि इस कैच को लपकते तो परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन कहना चाहिए एक जीवन दान मिलता हुआ वहां पर ओवेस को। 55 रन। एक बार फिर अच्छी गेंद और लगातार इसमें अगर कहना चाहिए कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी होती हुई और बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजों का अच्छी मानसिकता के साथ इस समय गेंदबाजी होती हुई। That's a good shot played out towards the long off region. Will get a single. That single will take the tally to 56 for the loss of 2 over number 11 in progress. Adil Dada is operating and Uwais Khan goes up. Strike brings Samir on strike. Samir waits for Adil Dada. Dada comes and bowls. That is a nasty one. That is awkward bounce of the track and beaten because of that bounce, and ball evades the wicket keeper and down towards the Zaidar at first slip area. So no harm done. Score remains 55 for 2. Scoops that one. Will beat the fielder, evades and eludes the fielder down to the 5-leg boundary. 4 more runs. Nazir addition to the tally. 59 it is for the loss of 2. We are in over number 11. You need runs. And it hardly matters. It doesn't matter for the batting side how they come, but they should get the runs. And that is a good shot. Great presence of mind. He sprayed down the leg side and nice use of the blade. And these are the shots. This is because of the evolution in the T20 cricket. And these shots, there are quite a few shots whose names are yet to be invented, because this is another one. And there isn't any name for that one, but he tried to scoop that one, and that didn't come off that complete blade, but nonetheless of the inner edge, of the thick edge down to the boundary. 4 more runs. 59 after 11. Oh, that's in the air. Will this be taken? Ishtiaq trying his level best. Oh, he puts in the full length dive, but what could have been a blinder, what could have been unbelievable one. The ball ricocheting off his body down towards the straight area, and in the meantime both the batters fetch brace, taking the score to 61 for the loss of 2. We are in over number 12 of the match. It is Akemir continuing to bowl from forehand, and Ishtiaq Rasool, the talented agile cricketer, he tried his level best over this time. Steps mid leg side, wanted to open up the offside, just finds the fielder there, a short extra cover. No run there, no harm done. It is 62 for the loss of 2. Over number 12 in progress. 12वां ओवर इसमें प्रगति पर, और अब तक 60 रन बना लिया है। अच्छी गेंद इस बार, हालांकि आगे जाकर के उसको खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से वहां पर कहना चाहिए चकमा दिया और गेंद वही पास में लुढ़की। खुद आकमीर ने फील्ड के बगैर किसी रन किया। अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी। हालांकि इस समय शांत धीमा क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन धीरे धीरे से दोनों बल्लेबाज असहजता महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक साझेदारी निभाते हैं, और यह अच्छा कहा जा सकता है गांदरबल ग्लैडिएटर्स के दृष्टिकोण से। अच्छी गेंद खिलाड़ियों के सारे खेला, गेंद हवा में, पीछे है खिलाड़ी, जब तक उसको फील्ड किया जाता करीब करीब सीमा रेखा से अंदर, तब तक 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 61 12वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे गांदरबल ग्लैडिएटर्स और फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के विरुद्ध समय इस आकर्षक मुकाबले की भिड़ंत होती हुई। आकमीर एक बार फिर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद उसको जगह देते हुए खेला, पीछे है खिलाड़ी, वहां पर एक ही छोड़ पे दोनों बल्लेबाज, लेकिन कहना चाहिए कि क्षेत्र रक्षण के हाथ में गेंद, यदि स्टंप्स पे थ्रो करते विकेट कीपर के हाथ में खतरा हो सकता था, और कहना चाहिए असमंजस की स्थिति यहां पर होती हुई। और अभी भी नाबाद बल्लेबाज समीर सामना करने के लिए आकिब का, इस बार लेग स्टंप पर और गेंद को खेला, हालांकि पीछे खिलाड़ी है तैनात, जब तक उसको फील्ड किया जाता 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, चहलकदमी करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62, संभवतः 2 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाज इसमें 12 ओवर पूरे हो चुके हैं, संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहां से हालांकि अभी भी 8 ओवर का खेल आना बाकी है और निर्धारित 48 गेंदें बची। अगर यहां से 60-70 रन और जोड़ लेते हैं, करीब करीब 130-140, और जैसा कि हम जो है आशा कर रहे हैं कि 130-140 आसान लक्ष्य रहेगा अगर हम बात करें। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल है, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी। Well, advocate is watching. Advocate Hilal Saab and all other beloved viewers, and be it Mir Hassan Saab, be it Advocate Saab, or be it Gulzar Saab, these are our beloved viewers, and that one flies up the top edge, and that carries down to the third man boundary. 4 more runs. Welcome sign of the very first ball, flies over the slip cord and down to the boundary. 68 it is for the loss of 2. And Ijaz Mani writes about the camera quality, and it is because of that perpendicular sunshine. Don't worry. Sailbot, thank you for your stars and your love in the meantime. Next ball coming up, Dada
comes on to bowl the next one. Oh, he wanted to scoop that one, wrapped him on the pad. Shot for LBW and umpire straight away. Adil shakes his head in disapproval. The two umpires of the match, Nazir, Adil and his colleague Jahangir John. These are the two umpires for today's big encounter, high voltage game. And he wanted to slog that one, doesn't connect to that one, and ball evades and eludes the bat into the safe hands of wicketkeeper. So now I'm done 68 for 2, over number 13 in progress. जी बिल्कुल, और 68 रन बना लिए हैं इस बार। गेंद सीधे स्टंप्स पे जा लगी है। तीसरा नुकसान उठाना पड़ा वहां पर गांधरबल ग्लेडिएटर्स की टीम। लगातार हम इस बात पे टिप्पणी कर रहे थे कि पूरी तरह से लाइन में नहीं आ रहे हैं गेंद बल्लेबाज, और अंत यहाँ पर एकाग्रता भंग हुई और गेंद सीधे स्टंप्स ले उड़ी। तीसरा नुकसान गांधरबल ग्लेडिएटर्स को। Well, another beauty is if you are not a great turner of the cricket ball, if you tend to bowl the straightener ones, and if you bowl wicket to wicket line, and look at that, when you miss eye hit, he tried to stay a bit leg side, wanted to open up the offside, and the ball evades the bat and comes into the sticks and castling him on that occasion, cleaned him up, clean bowled. But credit must be given to the bowler. He kept things tight, bowled wicket to wicket line. There was a bowler, namely Ajanta Mandis. You might have heard about him. He used to bowl those somebody, and there were too many people who were commenting about his mystery, but there was no mystery. He was tending to bowl wicket to wicket line, and he used to get 4 or 5 wickets each match. जी बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें, और शायद उसका प्रभाव भी आजकल दुनिया भर की जितनी भी लीग्स हो रही हैं, चाहे कैरेबियन लीग हो, आईपीएल हो, उसके बाद बिग बैश हो, या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, जितनी भी विश्व भर में लीग्स होती है, और कहीं ना कहीं आज का अगर हम इससे क्रिकेट की बात करें तो इसका कहीं ना कहीं उसका जो एक दबाव है, उसका एक प्रभाव जो है वो यहाँ पर भी दिखता हुआ अगर हम जम्मू कश्मीर क्षेत्र की बात करें। Well, Adil Dada continues to bowl. New man walks into the middle. Is Sahil Pollard. Pollard will face Adil Dada. He comes down the track. He has no idea what happened on the occasion. No idea. Lapse of concentration. He comes down the track straight away without understanding what to do on that occasion. And beaten all ends up. And Dada smiling towards his counterpart and even to the wicketkeeper. Next ball coming up, Dada goes, oh, that is awkward bounce. You can't do anything on that very delivery. Well, Abdul Wahid will try to do that next time, but that one almost up to the rib cage, just underneath the rib cage, and he manages to keep that one down off his gloves, but no harm done. Score remains static, 69 for the loss of 2 after 13 overs. Well, Mir Farooq, thank you for your love, and Arhan Butt and all other beloved viewers. Arc of Fenestration is one of our beloved sponsors, and then followed by Anthem Sports India, Fashion Feast, the Shining Star Pampur, and MHM multi-fashion branded store. Bright sunshine out here, little dispersed clouds, and look at this wonderful superb and a mesmerizing center of Undergam. And we are underway with a match of Rahman T20 Cup Undergam 2022. And Khan Jangi writes in, thank you, enjoying your tremendous voice. And Lonta Jamal and Arhan Butt, all of the beloveds, thank you for joining us this afternoon. And Nazir, credit must be given to the beloved viewers. They're also being patient at time and again. Abid Malik writes in, thank you Abid Malik, another talented cricketer of North Kashmir. Abid, he's believed to be the one-man army for his SKCC Glora. Oh, that's time. He wants you to open up on side, stepping bit leg side, takes the left leg out of the line of the ball, wants you to heave that one, it doesn't connect, and that is a dot ball. And let me check who's this. Uzab, the captain of the side, the captain who's leading up front, Friends Motors Narbal, is operating. Second ball coming up, and this time slogs that one and sweeps that one, doesn't get hold of. In both cases we can say that sweep and a slog, but it is half-hearted shot, and a half-hearted shot to be precise, down to where is the wideish mid on, a single is on there. 69 it is for the loss of 2. 69 पे 2 इस बार कदमों का इस्तेमाल, उठा दिया है गेंद को, नीचे है खिलाड़ी, कैच कर लिया और ये रहा चौथा विकेट। लगातार साहिल पोलार्ड बस ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और इसके साथ ही उनके विकेट का पतन होता हुआ वापस चलते हैं पवेलियन की ओर। Well, thank you all the lefty and Shaukat Butt and Miradil once again. Lapse of concentration, that pressure was mounting and that consumed wicket number 4 of Ganderbal Gladiators.
And that's what pressure does. Nazir, once again pressure mounting, climbing, and batsman looked in desperate need of a boundary, and he was looking to break free. He needed that, and his team needed that momentum, that sort of a momentum, and kind of a momentum. And trying to get that momentum back, he lost his wicket, and playing straight down to the throat of Skylark fielder. He does well, settling underneath under the serious and scorching heat at the moment, and the sun was perpendicular on him, and he does well, hold us on to the catch. Hits up to the man who hold on to the ball. Wicket number 4 is down. It is 69 for 3. We are in over number 14 of the match. 14वां ओवर इसमें प्रगति पर है और अब तक 68 रन संभवतः बना लिया है। चौथा विकेट लगातार अंतराल के बाद इस समय विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं गांदरबल ग्लेडिएटर्स के, और कहना चाहिए संकट की स्थिति। और इस समय गेंदबाजी हावी, और जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजी हुई है, कहना चाहिए कि रनों की धीमी गति से यहां पर तंग कर बल्लेबाज ने स्ट्रोक खेला और वहां पर पकड़े गए, तो चौथे विकेट का पतन होता हुआ लगातार प्रयास जरूर कर रहे थे। हालांकि ओवेस इस समय बीच मैदान में बने हुए, काफी कुछ निर्भर करेगा ओवेस पे, और नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं तो किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी होती है। अंतिम 6 ओवर का संभवतः खेल बचा है, और इन 6 ओवर में कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। और हमारे व्यूअर्स जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे। Hello, as somebody writes in, here's a great message for the batting side. What we are talking, what we are discussing in the com box, that is lacking from your side. We are talking of that, try to nudge the ball in the gaps and try to knock the ball in the gaps, play into the pockets on either side of the track. You have enough areas to maneuver the field with those singles, and you can easily pile up a big score, but you're unable to break free. You're not getting singles. Now you're trying to play those expensive drives and expensive big hits, and you are costing time, and again you are being caught and you are being cleaned up, and you have to make sure that you are in with a chance and you're playing the ball on merit. Thank you, Jadwani. Wrapped him on the pad. He's a dead shiver, and umpire raises the finger. One more bites the dust. And here is the captain of Friends Motors Narbal, and it is Uzab. Back-to-back wickets to him, and look at the man, he has to walk back, and Jangir John says, you are a goner. You have to walk back to the pavilion once again. When we talk about time and again, our players are unable to show that composure, that class. Look at this man, he is climbing once again. Better to leave the field, and you must be resting in the dugout. This is not the good way. And well, you might have covered that very match, Nazir, in Srinagar few days ago, when there was IPL stop playing. He showed that calmness, that caliber and class, and he started walking back straightly after being adjudged as LBW, and he was declared as LBW, and he should be walking back to the pavilion. And I think we must give credit to the umpire on that very decision. That looked pretty plumb to the naked eye. He was shuffling across. Another grievance, another problem with our batters is they mock the guard on leg stick, then they tend to shuffle across. And if the ball wrapped him on the pad, they talk that we have mocked the guard on leg stick, then how come you have adjudged us as LBW? But they didn't know that. They are shuffled across. They're trying to play cross the line, and they're getting castled, and then raising the fingers on the decision of umpire. That isn't a good sign. Thank you, Asif Dar, and thank you, Asif Dar. Thank you, Natik Shah and others. He's talking about Adil Border. He isn't playing in today's match. जी बिल्कुल, और क्रिकेट की महानता को बरकरार रखना होगा, बुद्धिमानी का परिचय देना होगा, और अंपायर का निर्णय हतमी, और बिल्कुल वही होता हुआ यहाँ पर 5वां विकेट गिर गया है गांदरबल ग्लेडिएटर्स का। और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार वापसी होती हुई नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर पहुंचे हैं, और किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे लगातार इस मुकाबले पे टिप्पणी होती हुई इस पहली पारी पे, जिस प्रकार से गांदरबल ग्लेडिएटर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध, हालांकि आधी टीम पवेलियन जा चुकी है और 68 रन बने हैं इस समय। एक बार फिर ये गेंद बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद हल्के से उसको हल्के हाथों से खेला जरूर, ये देखते हुए कि खिलाड़ी थोड़ा पीछे, और 1 रन, अच्छी रणनीति, चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया, और यही रणनीति रखने होगी। सिंगल्स डबल से स्कोर को गतिशील रखना होगा यदि एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। तो लगातार हमारे व्यूअर्स आसिफ डार, गाशम मलिक के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, आदिल बॉर्डर इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो कुछ नामी गिरामी जो हमारे इस लोकप्रिय और बहुत ही बेहतरीन दिग्गज बल्लेबाज ऑलराउंडर्स की बात करें, गेंदबाजों की बात करें, अगली गेंद को खेला, गैप का इस्तेमाल, और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर की ओर। हालांकि फील्ड कर ली गई, वहां पर गेंद की गति खुद ब खुद कम होती हुई।
एक रन और खाते में जुड़ता हुआ और एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता करीब करीब 69 ओवर पूरा हो चुका है। 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 69 पे 5। Well, 15 done. It is 69 for the loss of 5. Half of the team is back into the pavilion. Sohail Paul and Tariq Majid and Asif Dar are watching. Well, this is time and again we talk about the composure, the calmness, cool as cucumber. Being cool as cucumber is lacking. And Sohail Paul, thank you for your love and support, and all other beloved viewers on JKSportstime, whoever sent us the stars, be it he or she, and we are really indebted to you. The next serve begins. The very first ball on driven. And we'll find the long one in place. It is to be precise. Mid on, there is Ishtiaq Rasul the fielder. He picks it up and returns the ball to bowler. In the meantime, both the batters fetch yet another single. 72 for the loss of 5. Over number 15 in progress. Good ball on middle and off. Stand the stall, played it back to the ball. No run there. Won't be any run. Score remains 72 for the loss of 5. Half of the team is back into the dugout. And Race Aziz is talking about. And that's a good slog sweep, swept across down towards the mid-wicket area. The fielder comes across, does well. Before he could return the ball, the two batters had ample time in the world to get another run. 73 for the loss of 5. Somebody raise Aziz. And it is Salman. Thank you all the beloved viewers for dropping in your invaluable comments, and there is addition in the tally. That's a good delivery. Comes down the track. Once again, that is lacking from both the batters. They're unable to play the ball on Merit Nazir. What to do is to stay patient, and you have to be patient, and you have to carry on with those steeled nerves to launch the counter attack. जी बिल्कुल, और उसी प्रकार से बल्लेबाजी भी करनी होगी, लेकिन अब अच्छी रणनीति थी। हालांकि भरे स्ट्रोक्स नहीं आ रहे, तो ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट रखना होगा, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति जो बल्लेबाज में होती है वो भी अपने आप चलती है अगर आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखें। और अगर हम इस पूरे कश्मीर राज्य की बात करें, जिस प्रकार से आज क्रिकेट हो रहा है पूरे इस कश्मीर क्षेत्र में, हालांकि इसकी चर्चा जरूर करेंगे। अगली गेंद को खेला, रन लेने की कोशिश, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर उस ओर झपट्टा मारते हुए और सुरक्षित अपने कदम क्रीज में। ओवर पूरा हुआ समाप्त, 16 ओवर पूरे हो चुके हैं और इस समय कुल योग 74 समाप्त है। और पूरे कश्मीर क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रिकेट के प्रति उत्साह है, और मैं समझता हूं अगर हम इस मुकाबले की वर्तमान मुकाबले की बात करें, वर्तमान प्रतियोगिता की बात करें, रहमान कप T20 वर्ष 2022, और जिस प्रकार से मीर हसन साहब ने इस पूरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। या फिर अगर हम वुलर प्रीमियर लीग की बात करें तो गुलजार साहब ने भी काफी कुछ जो है योगदान दिया है क्रिकेट के इस क्षेत्र को। Well, exactly. Mir Hassan, people like Mir Hassan, people like Advocate Hilal, people like Gulzar Saab. These are the guys who are an inspiration to the society time and again. And the very first ball keeps that one out towards the wide-ish mid-on area. Fielder gets across to the ball. Sanders in the return. The two batters fetch another single. 75 it is. Very nervous number 16 of the match. Captain is operating. Captain, namely Uzab, is leading from the front. He is in his third over and has conceded a single of the very first ball. Next ball coming up. Now one more added to the onside field. Jangil on there, a short mid-wicket. Oh, that is a beauty. That is a good ball after pitching, turning quite a bit outwards, and batsman beaten all ends up. एक बार फिर उसेर उस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्ला जरूर चलाया, गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ, गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में डॉक्टर समीर। और इस समय बल्लेबाजी करते हैं और इस बार खेला पीछे खिलाड़ी, जी हां कैच कर लिया और सातवां छठा विकेट गिरता हुआ लगातार अंतराल के बाद जैसे ही थोड़ी सी साझेदारी पनपती हुई और उसी मुद्रा में विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं। लगातार कहना चाहिए पूरी तरह से इस समय गेंदबाजी हावी, जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम का सवाल है। 75 पे छठा विकेट गिर गया है, तो कहना चाहिए इस समय नफीथुली किफायती कस्सी गेंदबाजी अब तक। अगर सभी गेंदबाजों की बात करें, चाहे वो आकिब मीर हो, चाहे उजैर हो, चाहे इम्तियाज लेफ्टी हो, बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी का। Well, our beloved viewers, we like to convey a message to all the beloved viewers. The team who are feeling at the moment, Friends Motors Narbal, they have multiple jerseys with same number. Isn't they have put on the jerseys? Most of the players have put on jersey number 1, and look at these guys. Gawar Gilani writes in love and respect from Tahp Pulwama. Thank you for your love and for your support. But Nazir, once again, you can see that is their fault. It isn't our fault, and we have been given a list, and we are just following that, and that isn't our fault. Thank you.
And all the blood viewers, thank you. Uvax writes in advance, hard luck. And Farad Sofi, backbencher and all other viewers, thank you for joining us this afternoon. Well, Arc of Fenestration, Soil Paul, thank you for your stars. And Anthem Sports, India Fashion Feast, the Shining Star Popper, and MHM Multi Fashion Brand Store, Quimdar Bowling. That's a good ball on driven, but straight to Jangil on won't be any run. Nobody has sent us the digital stars. Thank you for your love. And somebody writes in Urdu commentator reminds me of radio commentary. Thank you. Oh, this time he wanted to heave that one, missed the liner ball completely. Wicketkeeper even couldn't stop that one. That yielded a single in the form of buys. And thank you Lon Manzoor and all other beloved viewers. Thank you for joining us this afternoon with this wonderful match. Friends Motors Narbal locking horns with Ganderbal Gladiators, and this is a big match. Don't go anywhere, don't fade away. It is going to be a big match and a humdinger of one and a heck of an encounter. Don't fade away, come back guys. You the man, believe in yourselves that this is a big match of the summer, to be precise. जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ इंदिरागाम के इस खूबसूरत मैदान में रहमान कप T20 वर्ष 2022 के अंतर्गत फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और गांधरबल ग्लेडिएटर्स के विरुद्ध। और उन श्रोताओं के लिए जो देर से हमारे साथ जुड़े हों उनके लिए बताता हूं कि आज सुबह इस दूसरे मुकाबले में, दिन के दूसरे मुकाबले में टॉस जीता गांधरबल ग्लेडिएटर्स की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और अब तक करीब करीब 16 ओवर पूरे हो चुके हैं। पारी का 17 ओवर लेकर पहली ही गेंद उसको खेला हल्के हाथों के साथ। ये देखते हैं कि खिलाड़ी थोड़ा पीछे जब तक उसको फील्ड किया जाता, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ और एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 6 विकेट के नुकसान पर आधी से ज्यादा टीम इस समय पवेलियन जा चुकी है। और इस बार गेंद को खेला पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। तो एक और 4 रन खाते में जुड़ते हुए गांधरबल ग्लेडिएटर्स के कुल स्कोर पहुंचाया 81 रन 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी इन बचे हुए 2-3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश। और इस बार फिर इस गेंद को खेला पीछे है खिलाड़ी, जब तक फील्ड किया जाता 1 रन पूरा कर लिया और 1 रन से ही संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 82। लगातार इस समय प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अभी विकेट 4 बचे हैं। तो ऐसे में आखिरी के ओवर्स में यदि 30-40 रन और जोड़ लें तो 120-130 तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि क्रिकेट महानसियों का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में नीचे है खिलाड़ी और उन्होंने गेंद को कैच कर लिया वहां पर और वहां पे विकेट गिरती हुई। जी हाँ, look at celebration from Dada. It's a kind of a different celebration and it's a kind of an innovation, and this is another style invented by this man. And he was trying to he looked like he might be dancing, but he wasn't. So in the end, so now harm done. It's another one goes down, to be precise, harm done in terms of the fall of wicket. And harm done to Ganderbal Gladiators, but glad to know that Ishtiaq Rasool does well on the boundary line. He was right in nearly in contact with the boundary there, but he does well. He held his nerve, holds on to the ball. Wicket number 6 is down. 7 is down in over number 17. And the newcomer who walks into the middle, we'll have to wait and watch. And as per the jersey number is concerned, we're following that. But look at that. They have another one with 38. So what we can do? This is another big problem and we can't say anything now. What is going on? You may carry on. जी बिल्कुल। और 38 नंबर की जर्सी पहने हुए ये बल्लेबाज पहली ही गेंद को खेला, लेकिन खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया बगैर किसी रन के। और समस्या जरूर आ रही है 38 नंबर की जर्सी करीब 2-3 बल्लेबाज पहने हुए, और उसी प्रकार से 36 नंबर की 11 नंबर की जर्सी। और हमारे लिए दिक्कत फिलहाल 1 रन वहां पर और खाते में जुड़ता हुआ। और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजी में अब तक देखने को मिला है। मात्र 18वें ओवर में अगर बात करें तो 78 रन बने, क्षमा कीजिएगा 83 रन बने हैं और 7 महत्वपूर्ण विकेट इस समय पवेलियन जा चुके हैं। Well, a big team is always a big team, and they have shown that caliber, the calmness, and they have been putting their opponents under the serious hammer and pressure, and they have been denying them their opponents any freebie. And credit must be given to the bowling side, Friends Motors Narbal, and their lineup: Ishtiaq Nag, their Jangir Lone, their Uzab, Mujib, Umar Ifu, Ishfaq Butt, Akimir, Abdul Qayyum, Imtiaz Lefty, Zaidar and Adil Dada. Fresh or beginners, the very first ball, and is played out towards the long on, gets a single, that's it, and that single takes a score to Taha Ghazi writes in. Thank you for your love and support. He's talking about the Amar Singh College Stadium and that Caribbean Cricket League. That is another good shot, but straight down to the fielder, and there goes wicket number 8, and jersey number 8 is
denied any freebie, and he finishes to the pressure. Uwais Khan is walking back. We have seen the back of 8-1, and they're falling like pack of cards, and they're losing their wickets in a bit of a cluster. They're falling in a bit of a cluster, and this another flop show coming your way, but don't get anywhere because other team, Friends Motors Narbal, is a big team, and they will definitely send their terrific openers to seal the deal as early as possible. लगातार जिस प्रकार से विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं और मनोहर भाई ये मानना पड़ेगा यहाँ पर कि एक दबाव की स्थिति बनी और उससे निकलने की कोशिश जरूर, हालांकि कुछ गलत शॉट सिलेक्शन के चलते इस समय विकेट भी गिरते चल रहे हैं, बिल्कुल गेंद की लाइन में नहीं आकर के स्ट्रोक्स ले रहे हैं और कहना चाहिए कि असमंजस की स्थिति बल्लेबाजों पर बनी हुई, जिसके चलते इस समय 8 विकेट गिर गए हैं और अभी स्कोरबोर्ड पे 100 रन भेजने लगा है. Well, Gawar Gilani, thank you for your love and sport. And Sam Ufu and Darkesser. Well, credit must be given to the sponsors of JKSportstime, Arc of Administration, Anthem Sports India, Fashion Feast, the Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store, Margam. And these are beloved sponsors, and Zahur Ahmed, and Zahid Ahmed, and Zuhur Ahmed, and Amir Lone, Pizza Babar, and Rais Aziz. Thank you all the beloved viewers for tuning into the live broadcast this afternoon belatedly. And at this very crucial juncture, 83 displayed on the big scorecard. They are lost 8 wickets after 17 overs. Fresh over is about to start. 18th over it is going to be, and we'll have to wait and watch. Kuyumdar is going to continue. Khalid walks into the middle, and I hope that Khalid will be the right out here at the center at this very crucial juncture. And Shahid Shoda and Cricket, thank you all the beloved viewers for sending us the stars this afternoon. Kuyumdar ball that one, that's a good ball, played back to the ball, won't be any run. Thank you Javed Ali and others for your support. Well, Nazir, you lost kind of interest when the batters or the bowlers are not up to the mark. When it is an evenly poised contest, it really tends to lose quite a bit. जी बिल्कुल मुकाबला बड़ा है, हालांकि पूरी तरह से जिस प्रकार से आशा की जा रही है क्रिकेट के समर्थक और दीवाने इस मुद्रा में थे कि एक आकर्षक मुकाबला देखने को मिले, लेकिन परिस्थितियां कुछ और, लगातार विकेट्स गिरते चले गए. गांदरबल ग्लेडिएटर्स के 8 विकेट गंवा चुकी है और करीब करीब 85 रन बने हैं अभी भी. तो कहना चाहिए कि इस समय एक संघर्षपूर्ण स्थिति, दर्शक क्रिकेट के दीवाने और प्रेमी भले ही परिणाम कुछ भी हो और चाहते हैं कि एक आकर्षक मुकाबला देखने को मिले. हालांकि इस समय शांत धीमा क्रिकेट चलता हुआ फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम इस समय गेंदबाजी करती हुई, और वहीं पे बात करें गांदरबल ग्लेडिएटर्स इस समय 85 पे 9 8 और इस बार अगली गेंद को खेला पीछे, खिलाड़ी काफी दूर और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा की ओर, लेकिन गेंद की गति खुद ब खुद कम होती हुई जब तक उसको फील्ड किया जाता, और संभवतः ये 3 रन और खाते में जुड़ते हुए, और कोशिश यहां से जरूर कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस लक्ष्य को ऐसे तैसे करके 100 के पार पहुंचाया जाए. फिलहाल ओवर पूरा हुआ और 18 ओवर की समाप्ति के बाद शायद 86, इसमें कुल 87 रन 8 विकेट के नुकसान पे. Zirana, the thing is, we have seen this afternoon Ganderbal Gladiators were unable to stitch a partnership, which is another key aspect and which is the need of an hour, and they needed a partnership. They were unable to build a partnership, and they let the momentum ooze out of their hands, and others, they grabbed the opportunity with both the hands. I'm talking of Friends Motors Narbal, and they does well and they did well. Their bowlers, they're putting their 100% in. Mohammad Al Tabat and Jangir Mir and backbencher. Thank you all the beloved viewers. We're talking about the cool and poised upside of Friends Motors Narbal, and they have their guys, all of them are carrying cool head on their shoulders, isn't? And they've really been up to their ante, and they're not giving them any inch away. And somebody writes in commentator made the match more interesting, and thank you Gawar Gilani and others, thank you for your love. Well, bright sunshine out here in the middle, but these two batters who are out in the middle, they have a job on their hands. They have to do that, and this time he wanted to fetch that one from outside the off stump, doesn't get to the pitch of the ball. Once again, that instinct is lacking. You're not in for scoring runs, you're just trying to heave at it. That isn't a good shot selection, that is a poor shot selection. Just try to get to the pitch of the ball, then you can do whatever you want. जी बिल्कुल आंखें बंद करके आप स्ट्रोक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता, लेकिन इस बार बल्ले का संपर्क हुआ और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर, संभवतः 6 रनों के लिए.
Well, he got a half tracker, exactly, that's gone for a half a dozen. But this time he showed the composure, he waited for that bad ball. And then he was eyeing that square leg area. He does well and deposited that one in that area. But that is a good shot, he picked it up, and a very nice picked up shot. And a nice pick-up shot or picked up shot. And both the pronunciations are right, and that 6 yielded. And once again it was there to be put away. And both the batters are scampering through. And Indian made it with ease, and they're going to come back for the second because of that overthrow. So 2 runs added to the tally. To be precise, 8 fetched out of 2 balls. Poor commentators, and where are they from? Myself Munaf speaks. I'm from Kupwara. My colleague Nazir Saab, Nazir Ahmed Sheikh is from Uri. Thank you, Mohammed Nazir. In the meantime, Ishtiaq Rasool continues to bowl. Next ball coming up with no slip in place. I think it's a no ball. It's going to be a freight. Ishtiaq Rasool not happy, but he will have to rebuild that one. And this over is to some extent an expensive over continues from this fella who has been playing since ages, I must say, and still is committing mistakes. And look at Dada. Dada is still talking to him. What are you doing? Why are you getting overcautious? And Dada, look at the Dada. Dada is spitting fire and venom, and he is trying to acknowledge his colleague how to bowl under the certain circumstances. इश्तियाक रसूल इस ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, करारा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए दर्शनीय स्ट्रोक, और इधर गेंद बल्ले से टकराई, उधर सीमा रेखा से बाहर। काफी लंबा वहां पर गैप था और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 4 रन जोड़े अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और यहां पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सके। और दोनों बल्लेबाज, हालांकि ये पारी का करीब करीब कहना चाहिए 19वें ओवर पर गति पर, उसके बाद सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी बाकी होगी। इश्तियाक की गेंद, फिर जगह मिली, फिर खेला स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। 2 गेंदों से 2 चौके, और अब थोड़ी सी कहना चाहिए रोमांचक इस मुकाबले में आती हुई 2 गेंदों से 8 रन और जोड़ते हुए। Well, an expensive. We're still waiting how many runs came up. This one 87 at the completion of 18 overs. It has displayed on the big scorecard, and we go through that. We're waiting. That scorer is updating there, and this is Rahman T20 Cup Undergaon year 2022. The name behind this very successful event. Well, we have ball boys, we have umpires, and I mean officiators, isn't? And the biggest of all is the man who is the chief organizer of Rahman T20 Cup Undergaon is Mir Hassan, and his hard work has really paid off, and paid him off and all other cricket fraternity of the valley. And he has really been among those big names of the valley who are hosting tournaments time and again, isn't? And the last of the beginners, 106 on the board, 100 comes up, and look at that expensive, and 19 I think so came up, that 87 were displayed on the board at the completion of 18th over, and 19th over done, it's 106, and that single added to the tally. 107 now on the board, and expensive that has really shifted the momentum to some extent. Ganderbal Gladiators way. Second ball of the final over, he wanted to slog that one and doesn't get hold of that one. The ball didn't come onto the bat, and he stayed too much leg side, and was trying to open up the onside, to be precise. He was trying to give himself the room which wasn't available. He wanted to create sort of a ready-made room, isn't? But that room, even after being created, he was unable to get right behind that. This time he wanted to slog that one once again. He wanted to launch that one, doesn't get to the pitch of the ball, up the lower end of the blade down towards the short mid wicket. Dada, the fielder there, just a single 108 for the loss of 8 over number 20 in progress. आखिरी ओवर पारी का चलता हुआ, और आदिल दादा है सबते वहां पर, और ये गेंद इसको खेला जरूर, लेकिन पीछे है खिलाड़ी। जब तक वो गेंद को फील्ड करें, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन मना किया वहां पर। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 109 हो गया है आखिरी ओवर में। 20 ओवर का ये कोटा, और पहली पारी चलती हुई गांदरबल ग्लैडिएटर जो इस समय टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकाला, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी है, जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 110 हो गया है दूसरे रन के लिए वहां पर, लेकिन मना किया। तो 1 रन के साथ स्कोर 110, 9 विकेट के नुकसान पर, हालांकि ये 8 विकेट के नुकसान पर, क्षमा कीजिएगा। Well, Rais Aziz, for your kind information, you belong to the family, you need to work on the basics. You doesn't seem to be the human, you are inhuman, and that is overthrow,
And we'll have to wait and watch how many runs fetched out of that one. We'll have to wait and watch. Races is you need still guidance. You're lacking those things, and you must convey this message to your dear ones and your beloved ones, your stalwarts. You need you need to lot improve, and you need a lot of guidance because you are behaving like inhuman. And that marks the completion of 20 overs. 20 done. At the completion of 20 overs, it is in excess of 111. Nazir, with the 20 overs coming to an end, an inning where we saw the ebbs and the flows of the game, and now we're coming to an end where we can say that we're going to be in for the second innings. We're going to be in for the chase of Friends Motors Narbal, and their side will chase down the total that has been set by their opponents. They need 115 to win this one and to advance in Rahman T20 Cup Undergam in the next stage. And we shall be back in a while with the chase. And look at this very special person behind Rahman T20 Cup Undergam, and he's really working hard. We have been talking about these sponsors and these organizers who are officiating and organizing different tournaments, be it Rahman T20 Undergam, be his colleague Gulzar Saab has hosted at WPL and others. And this is a wonderful effort, and it is because of their hard work it has really paid off, and they're providing a time for young birdies to excel to their level best and to groom up a bit. We shall be back with the chase in a while. Do join us back for the live, because Jahangir Lone, Akib Mir and others are going to lock horns here at the center. They're going to provide you the rocking party this afternoon.